माउंड क्या होता है? टीला क्या होता है बताइए? ज्योग्राफी आदि में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आगे, सर पढ़ाएंगे। पहाड़ जैसा है ना? हाँ हाँ, टोम जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स अ पाइल, राउंडेड पाइल ऑफ मटेरियल रिमेन्स। सरफेस से ऊपर उठा हुआ है और क्या है? पाइल है, ढेर है, उसी को क्या कहते हैं? माउंट है। तो ये है माउंट, राउंडेड पाइल ऑफ, राउंडेड पाइल ऑफ material remains. Material remains. When we talk about material remains, what does it mean? Material remains means में कुछ भी आ सकता है, आर्टिफैक्ट आ सकता है, टूल्स आ सकते हैं, मतलब जो हमारा फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ मतलब जो हमारा मटेरियल लाइफ है उसके संबंधित कोई भी चीज, दैट विद द पार्ट ऑफ मटेरियल रिमेन्स। सो इट्स अ राउंडेड पाइल और रेज्ड, है ना, सरफेस से जो ऊपर उठा हुआ भाग है रेज्ड, दैट इज नोन एज माउंट। ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी फ्लैट में रहते हैं, उसकी एक बालकनी है और आप अपने घर चले जाते हैं 5 7 10 महीने, क्या होता है जब आते हैं तो डस्ट के लेयर्स बन जाते हैं, उस पे बनते हैं कि नहीं? उसी तरह से अगर कोई सभ्यता हो जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो, कोई संस्कृति रही हो कहीं और चले गए दूर किसी कारण से, तो उसके जो क्या होंगे? रिमेन्स होंगे, वो नीचे दबते चले जाएंगे और इस तरह से एक आकृति उभर कर आएगी मटेरियल रिमेन्स की। तो दिस इज नोन एज माउंट। और ये कैसे होता है? ड्यू टू डिपोजिशन, है ना, ये डिपोजिट होते हैं, है ना, ड्यू टू द डिग्रेडेशन फैक्टर्स इन ज्योग्राफी दिस हैपेंस। तो इसको फिर क्या करते हैं हम? एक्सकावेट करते हैं, उत्खनन करते हैं इसका। तो माउंट्स आर एक्सकावेटेड। ठीक है। और जो एक्सकावेशन होता है दैट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो लिख लीजिए एक्सकावेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। This is done by expert archaeologist. Archaeology science is very very famous, very very important, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक, यू हैव टू बी properly trained to be an archaeologist। ठीक है। तो अब ये vertical and horizontal, which excavation is easier? Vertical. So if you are doing vertical excavation, then the material remains should be coming from this part. So this is a bit easier, less time taking, isn't it? Less time taking, less expensive. The features: less time taking, less expensive, and easier, more easier. Why it is important? Because it provides the chronology, sequencing, na chronology. So it comes with chronology. One culture, then second culture, then another culture. So this is a sequencing, layer by layer, na? So different cultures should become. Getting the point? Vertical. The second is horizontal. Now horizontal, it would be time taking, expensive, but it would be more holistic. All the things, है ना, which are there, that would be excavated, more holistic. So ideally, which should be done? The second one, but not possible. Getting the point? Resources needed. The government's will is also needed. Suppose a civilization or a culture is there, the people related to that culture or civilization, they use amulets. But the remain of amulet is here, it is not here. So if you are making the
vertical excavation, you cannot understand them. You cannot get them. Getting the point? So therefore, holistic approach would be horizontal. But it is not so easy, and that's why in India, vertical excavation has taken place, है ना? At large scale. This is very limited. Getting the point? So excavation of the mound sites provide us insight to understand ancient history. ठीक है, समझ में आई बात?